Welcome back to my Kane. So in this video we'll be discussing what happens when metals and non-metals react with each other. So let's discuss their chemical properties. Metals are electropositive in nature and non-metals are electronegative in nature. Now then let's know what does this mean. So a metal loses electrons. Whenever we take a metal, it loses electrons in a chemical reaction. So let's take example of Na. Na का जो atomic number होता है वो होता है 11. तो हमने 9 में पढ़ा है अबाउट शेल्स. तो इसके पहले शेल में कितना आएगा 2, फिर के के बाद L, इसमें 8. तो 2 + 8 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, बच गया 1, सॉरी 10 प्रोटॉन्स हो गए, बच गया 1 प्रोटॉन. देन M, दिस वुड बी 1. So this is its electronic configuration 2 8 1. This is electronic configuration of Na. So we have studied that an element is electrically neutral. Originally an atom is electrically neutral. So if Na has 11 protons, 11 positive charges, then Na would also have 11 negative charges to balance it out and be neutral. Now what is happening? Na is electropositive in nature, meaning it will lose one electron, so it will become 1. It will not necessarily any metal will not just lose 1. It depends on the valency. What is the valency? Last valence shell, number of atoms in valence shell. So what is valence shell? Last shell. So here M is the valence shell because it is the last shell. How many protons are in the M shell? 1. We can also say there are 1 electrons in the M shell. 1 electron in the M shell. So if there are 1 electron in the M shell, that would mean that its valency, and the valency of Na is 1. So it will lose 1 electron in a chemical reaction. Now why does metals lose electrons or why does non-metal gain electron? It is to form an octet. Octet means having a complete shell. When is a shell complete? Having 8 in its outermost shell except K shell, because K has at most 2. So any shell has 8 shells, 8 electrons, because that is what a complete valence shell means. Or we can also say any metal or any compound, any element loses or gains electrons to to complete its octet and form a noble gas configuration. What are noble gas? Noble gases are those which have complete last shell. Complete last shell meaning there is no space for any other electron. For example, here we already have 8. We cannot have 9. 8 is the maximum number. So this is a full shell. So if we just remove 1 electron from Na, so entire M shell would be removed and we will have K and L shell. So this is a complete shell. This is a complete electron and this has attained noble gas configuration. So similarly, chlorine also does the same. Chlorine's atomic number is 17. So the electronic configuration is chlorine's atomic number is 17. So its electronic configuration would be 2 8 7. So it would gain 1 electron. Why? Because chlorine is negative. Chlorine is non-metal and non-metals are electronegative. So electronegative are they will gain an electron. So we will get Cl minus, giving us 288. So now let's look at here. So we have Na with the electronic configuration 281. Then ionization energy. So ionization energy is the energy required to remove an electron from an element. So we are removing one electron. So for removing this electron, we would need energy, and this energy is known as ionization energy. So when we remove this one electron with the help of ionization energy, then we have Na plus ion or cation of Na, sodium, or Na plus ion. So because it will just be 2,8. Now why is it plus? So we know that in Na, let's look here. In Na, there were 10 protons. 11 protons with positive charge and 11 electrons. Now what is happening after a reaction? There are still 11 protons, but it loses 1 electron. So we have 10 electrons. There are more protons than electrons, hence it is gaining a positive charge. So we have Na plus ion 2,8 and 1 electron that it has lost. Now let's look at chlorine. So chlorine has electronic configuration as 287. It will gain 1 electron, and
after gaining one electron, it will form a Cl minus. Same concept would be applied in Cl. You have 17 plus and 17 minus. You gain one electron, you have 18 minus and 17 plus. So you gained one electron. After gaining, there are more number of electrons than protons, hence it will be negative charge. And we have electron affinity. Electron affinity. So electron affinity is the energy required. Electron affinity is the energy required to add one electron. So electron affinity is the energy released after adding one electron. इसमें क्या हो रहा था, Na में हम आयनाइजेशन एनर्जी लगा रहे थे ताकि इलेक्ट्रॉन जुड़े, इलेक्ट्रॉन हटे, और इसमें इलेक्ट्रॉन अफिनिटी यानी एक एनर्जी रिलीज हो रही है क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन जुड़ रही है. इसमें ये एंडोथर्मिक है, ये एक्सोथर्मिक है, क्योंकि इसमें एनर्जी लग रही है, इसमें एनर्जी रिलीज हो रही है. नाउ लेट्स लुक एट द रिएक्शन. व्हाट वुड हैपन इफ दीज थिंग्स रिएक्ट. So for reaction of these things, what we need to do is form the dot structure, electron dot structure. Electron dot structure. So what we do in electron dot structure, we just write the symbol of the element and we make dots, and after making dots, how many dots we make? The number of atoms in the last valence shell. So how many electrons does Na has in its last shell? 1. So we will just make 1. And we would write plus sign. We are reacting Na with Cl. How many electrons does Cl have in its valence shell? Valence shell is last shell. 7. So let's not represent it with dots. Let's just represent it with cross. So you have 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So now what would happen? Na would form one positive ion. A positive ion. How will it form one positive ion? By releasing this electron. And how will it form a negative ion? By gaining one electron. So the electron that Na lost is gained by chlorine. Electron that Na lost, this electron that Na lost is gained by chlorine. So what would happen is that, let me just write it below. So what happened was that Na formed a positive ion and it had no electron in its valence shell. There were no electrons. And chlorine had its original 7, but this electron of Na was also added. So we will represent it with dot, and it attained the minus charge. So 1 plus charge on Na and 1 minus charge on chlorine gets cancelled out. So we get a neutral compound NaCl. This was the formation of NaCl. Now let's look at magnesium chloride, MgCl. So for MgCl, we have Mg. What is the electronic configuration of Mg? So in Mg, if you would make the electronic configuration of Mg, you would found out that there are two valence electrons in its last shell. कि जो मैग्नीशियम का लास्ट शेल होता है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. एंड वी हैव क्लोरीन. वी ऑलरेडी नो देयर आर 7 इन इट्स लास्ट शेल. मगर अब इसने ये दोनों लूज करेगा, ये तो एक ये भी लूज करेगा, एक ये भी लूज करेगा, तो इनमें से एक तो इधर चला गया, एक क्लोरीन का तो हो गया. एक क्लोरीन हैज फॉर्म्ड इट्स ऑक्टेट एंड इट इज अ कंप्लीट, इट्स ऑक्टेट इज कंप्लीट. सो एक इलेक्ट्रॉन जो Mg का था वो तो इसने ले लिया, बट इसका दूसरा वाला अभी भी रोम कर रहा है, अलग है, तो इसे दूसरा वाला भी कोई चाहिए. तो हम क्लोरीन MgCl ही बना रहे हैं, तो दूसरा Cl लेंगे. दिस Cl वुड आल्सो हैव 7, और इसका ये जो है ये वाला इलेक्ट्रॉन ये इसमें चला जाएगा. तो Mg का एक और Cl के 2, तो इसका क्या बनेगा? Mg 2 प्लस. क्यों 2? क्योंकि इधर 2 इलेक्ट्रॉन थे. 2 प्लस और Cl में 7 थे ओरिजिनल, हर एक में एक एक जुड़ा, ये माइनस चार्ज. और क्लोरीन के कितने एटम्स थे? 2 एटम्स थे. क्लोरीन के, ये Cl है, सॉरी, क्लोरीन के 2 एटम्स थे, Cl और Mg का एक. तो Mg का एक है, तो एक को तो हम कुछ लिखते नहीं, तो इसलिए हम एक को लिखेंगे नहीं. Mg के एक है विद 2 चार्ज, Cl का 2 एटम है विद माइनस चार्ज.
तो इसमें 2 पॉजिटिव चार्ज है और इसमें 2 नेगेटिव चार्ज है, तो ये भी बन जाएगा एक न्यूट्रल कंपाउंड MgCl2। MgCl2। अब हम देखेंगे सोडियम ऑक्साइड का Na2O। Na2O। तो Na का वापस से डॉट स्ट्रक्चर कितना होता है, Na का 1, और यहाँ पे ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन्स, ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन्स। अब इसे ऑक्टेट बनाना है और इसे भी ऑक्टेट अपना फॉर्म करना है, इसे भी अपने वैलेंस शेल में इसे 2 इलेक्ट्रॉन्स और चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन्स और चाहिए, और इसे ये इलेक्ट्रॉन छोड़ना है, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन यहां पे दे देगा, तो एक इसका हट गया, मगर अभी भी एक पेंडिंग है, अभी भी इसमें एक ऐसा है, एक एम्प्टी स्पॉट है, तो उसके लिए हम एक और Na डाल देंगे, तो यहां पे ये एक और आ जाएगा। अभी क्या फॉर्म होगा, Na प्लस, क्योंकि इसके एक एक थे इलेक्ट्रॉन्स, एक एक इलेक्ट्रॉन्स थे। अब Na के कितने एटम्स हैं, यहाँ पे 2 एटम्स हो गए, तो Na2, और ऑक्सीजन, ऑक्सीजन में कितना था O, क्रॉस क्रॉस, और यहाँ पे 2 डॉट्स और क्रॉस क्रॉस, ये माइनस चार्ज रहेगा, मगर यहाँ पे सिर्फ माइनस नहीं रहेगा, यहाँ पे 2 माइनस रहेगा। 2 माइनस क्यों, क्योंकि इसकी वैलेंसी 2 है, इसे 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए थे, इस अकेले एटम को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए थे, तो इसलिए ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 है, तो यहाँ पे 2 पॉजिटिव 2 नेगेटिव, यहाँ पे बन गया एक न्यूट्रल कंपाउंड Na2O।